This is called Potter scene. So in this scene, there is a gatekeeper, Potter, and he is very drunk. And this is the morning in which King Duncan is killed the night before, but nobody knows. So it's a house, the castle of Macbeth, and there is knocking. Knock हो रहा है. तो पॉटर अभी दरवाजा खोलने से पहले बोल रहा है, देयर इज अ नॉक इंडीड. बोल रहा व्हाट नॉकिंग, वो गेट कीपर है, उसका काम है दरवाजा खोलना, चाबी से फिर बंद करना, ये सब गेट कीपर है. इफ ए मैन वेर पॉटर ऑफ हेल गेट ही शुड हैव टर्न ओल्ड टर्निंग द की. ये पॉटर मैंने गेट कीपर बोल रहा है कि वो जहन्नम का कोई गेट कीपर होगा. सो वो बूढ़ा हो जाएगा दरवाजा खोलते खोलते, क्योंकि इतने लोग आएंगे. सो दिस पॉटर सेज दैट इफ समबडी बिकम्स द gatekeeper of hell, he has to open the key and lock it for so long that he will turn old. So the Potter scene is a comic relief. Knock, knock, knock. ना he visualizes. वो पी के अपने दुनिया में बोले जा रहा है. So who is there in the name of Beelzebub? बोल रहा है शैतान के नाम से. अब हेल है तो शैतान के नाम से ही लोग आएंगे ना. It's hell, so people will come in the name of Beelzebub. Here is a farmer that hanged himself on the expectation of plenty. तो ये बोल रहा है कि बेल्जिबब के नाम से कौन है? पहला आदमी जो हेल में आ रहा है वो है फार्मर, जो अपने आप को हैंग कर लिया है बिकॉज ही एक्सपेक्टेड अ लॉट. तो मतलब ही वाज ग्रीडी, मतलब ही एक्सपेक्टेड से सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप, उतना नहीं हुआ, सो ही कमिटेड सुसाइड एंड ही डाइड. बोल रहा या हियर यू विल हैव नैपकिन एनफ फॉर यू. बोल रहा यहाँ तुम्हारे लिए बहुत रुमाल है. Knock, knock, knock. Who is there in the adult devil's name? He has forgotten the other devil's name. So he's saying, दूसरे शैतान के नाम से कौन है जहन्नम में? Who is there in the hell in the name of devil? Faith here is an equivocator that could swear in both the scale against either scale. मतलब he is an equivocator, cheater who could swear against both the scale. वो तराजू पल्ला में इस साइड वाले को भी चीटिंग करता था, उस साइड वाले को भी चीटिंग करता था. मतलब he was such a expertised cheater that he could cheat both the parties without making any one of them realize that he is cheating any one of them. Who committed treason in the name of God, और ये भगवान के नाम पे धोखा देता था. Yet could not equivocate to God. भगवान के नाम पे लोगों को तो धोखा दिया, लेकिन भगवान को धोखा देके ये हेवन में नहीं आ पा रहा है. So here he is saying एक equivocator है जो दोनों साइड को धोखा देता था, लेकिन वो भगवान को धोखा देके हेवन में नहीं आ पाया. Oh, come in, equivocator. Knock, 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 knock. Who is there? Here is an English tailor who come here for stealing out a French goose. French dress होता है एक बहुत पतला सा, तो बहुत कपड़ा लेके कपड़ा चुरा लेता था. This is a time where people used to have customized clothes. लोग कपड़ा देके सिलाते थे. So he's saying तीसरा नंबर कौन है? Knock, 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 knock. कौन है तीसरा नंबर? तीसरा नंबर जो जहन्नम में आने वाला है इंसान, वो है एक टेलर, इंग्लैंड का टेलर, इंग्लिश टेलर, जो क्यों आया है हेवन, सॉरी हेल में? बिकॉज ही वाज स्टीलिंग द गूज. गूज मतलब वो फ्रेंच ड्रेस में कपड़ा चुराते थे. कम इन टेलर, हियर में रूस्ट योर गूज. रूस्ट योर गूज मतलब वो इस्त्री करते हैं, उसको बोल रहे हैं रूस्ट योर गूज. मतलब हियर यू कैन आयरन योर क्लोथ्स. यहाँ जहन्नम में बहुत आगे आओ, यहाँ अपना कपड़ा इस्त्री करो. तो पहला इंसान है फार्मर, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया, ग्रीडी बना, लालची बना, उसके लिए वो आया. नेक्स्ट कौन है? एक धोखेबाज जो सब लोगों को धोखा देता था अगेंस्ट आइदर स्केल. ही कुड स्वेयर इन बोथ स्केल, मैंने बोथ साइड को धोखा देता था विदाउट बीइंग कमिटेड टू आइदर वन ऑफ देम. तीसरा है एक टेलर, जो ये दरवाजा खोलने से पहले पॉटर अपने आप में बड़बड़ा रहा है पी के. So the Potter says, who is the third person to come to hell? The third person to come to hell is a English tailor who has come here for stealing out French dress. So here he can come and iron his clothes. Knock, 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 knock. Never at quiet. What are these? But this place is too cold for hell, and I will devil it no farther. He's saying कि ये बहुत ठंड जगह है, और अब यहाँ डेविल पॉटर गिरी नहीं हो सकता. मतलब he's saying hell is supposed to be very hot and the place is very cold. So he's saying this place no more can be hell. Had I thought to have let in some more profession that goes primrose way to the everlasting bonfire.
He's saying, I have thought of bringing more people, corrupt people, politicians or something, of rapists and murderers, serial killer of that kind, who take the primrose way, who take a very shortcut way, beautiful way, but they ultimately go to the bonfire. Bonfire means everlasting fire of hell. So this दरवान दिस गेट कीपर पॉटर इज सेइंग कि अगर मुझे वक्त मिलता तो हम और लोगों को बुलाते जो शॉर्टकट लेके जहन्नुम में आते हैं. सो दिस पॉटर सेज आई हैव कॉल्ड मोर पीपल फ्रॉम मोर प्रोफेशंस, मोर जॉब्स, मोर डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ लाइफ. इफ अगर वक्त होता है लेकिन यहाँ पर ठंडा लग रहा है तो ठंडा लग रहा है, ये जहन्नुम नहीं हो सकता है. सो इसे मैं उन लोगों को बुलाता जो प्रिमरोज रास्ता लेते हैं, मतलब जो शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, बट दे कम टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर, दे कम टू द फायर ऑफ हेल. लेकिन मैं फिर नॉक कर रहा है, and on, coming, remember the potter, he opens the gate. इतना देर तक वो लोग खटखटा रहे तब ये खुला. So Macbeth comes. Macbeth has come to wake King Duncan. So Macbeth says, "Was it so late, friend, that you went to bed, that you lie so late?" Macbeth is saying कि friend इतना लेट से तुम इतना देर बाद हम लोग दरवाजा खोल रहे, क्या तुम बहुत लेट से सोए थे? Faith sir, we were carousing till the second cock. Second cock मतलब जब मुर्गा दोबारा चिल्ला रहा था. It's a time, it's a way of measuring time. So Potter बोलता है, हाँ सर हम लोग बहुत रात तक, ऑलमोस्ट सुबह तक हम लोग कैरोसिन कर रहे थे, उन्हें पी मस्ती कर रहे थे. So Macbeth is saying, why did you open so late? Were you enjoying or were you awake till late at night? He says, yes sir, हम लोग सेकेंड कॉक तक एंजॉय कर रहे थे. एंड ड्रिंक सर इज अ ग्रेट प्रोवोकर. इनसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है. पॉटर खुद ही बोल रहा सर पीने से ना तीन चीज होता है. ड्रिंक कैन प्रोवोक थ्री थिंग्स. ड्रिंक कैन एक्साइट थ्री थिंग्स. So Macbeth is saying, what three things does drink provoke? बोल रहा क्या तीन चीज ड्रिंक प्रोवोक करता है? मैं भी सर बोला सर कसम से नोज पेंटिंग. पीने से मैंने when you drink too much your nose becomes different color. And when you drink too much, you sleep and then you urinate. Urine बहुत पास होता है. So he's saying पीने से ना सर तीन चीजें, नाक लाल हो जाता है, सोता हुआ तो यूरिन. लेचर इज इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स. पॉटर इज सेइंग कि ड्रिंक करने से ना लेचरी होता है. लेचरी मींस सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इट अनप्रोवोक्स द एक्ट. Means there is a lot of desire, but it takes away the ability for performance of sexual act. So sex is supposed to be, it's written, it provokes the desire of sex, but it takes away the performance of doing the sex. So therefore drink is an equivocator in lechery. So जैसे एक इंसान धोखा देता है वैसे शराब भी धोखा देता है. कैसे? When you drink too much, then you have lots of sexual desire, but then the performance of sexual act is zero or almost none. So drink is a cheater because he's giving the desire but takes away the performance. It makes him, it gives him the courage. Drink gives him courage to man, but it destroys him the ability to do sex. It takes him home, it excites him, but it takes away the performance ability. It persuades him, it gives him the courage to feel a lot of sexual impulse, but it disheartens him. When he goes to perform the sexual act, then it ability is gone. Makes him stand to, not stand to. So it gives him the courage to stand, but then it gives him the inability to perform the sexual act. In conclusion, drink equivocates him in sleep, and living in the lie leaves him. So drink उसको हरा देता है, फिर वो उसको धोखा देके वो चला जाता है. Drink is said to be a cheater who provokes a man for sexual desire but takes away the performance, as a result of which the drink is called to be an equivocator, means a cheater. So वो drink क्या करता है कि इंसान को सुला के उसको धोखा देके चला जाता है. मैकडा बोल रहा है, I believe drink gave you lie last night. So मैकडा बोल रहा है, क्या तुमको भी ड्रिंक धोखा दिया last night when it took away the performance of sexual act? That it did, sir. बोल रहा हाँ ड्रिंक हमको भी धोखा दिया. To the very throat of it, बोल रहा इतना तक पी लिए थे, but I quitted it, I vomited it for the lie. बोल रहा हमको झूठ बोला तो ड्रिंक को गुस्सा हो गए उसको मुंह से बाहर निकाल दिए, मैंने उल्टी कर दी. ड्रिंक was cheating him, so he removed it. I think being too strong for him, though he took up my legs and sometime, yet I made a sip. So he's saying, drink was so powerful, I was fighting with the drink, so drink took up my leg, but I vomited to cast him, to take him
He's saying drink is a provoker of three things. ड्रिंक पीने से सेक्सुअल डिजायर तो चढ़ता है लेकिन परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है. So he's saying drink is a cheater. So he was fighting a kind of कुश्ती, fight with drink. I think being too strong for him, drink बहुत powerful था, तो मतलब wine is personified as a human being. So the wine was so powerful that it took away the leg of Potter. Well, yet I cast him, and yet I defeated him. So he's saying कि I fought with drink a lot. मतलब बोलना चाह रहा हूँ इतना पिए, इतना पिए, इतना पिए, इतना पिए, इतना पिए. I drank so much, and drink was actually having an influence on me, but I refused. I cast him. Is the master steering money awake? अगर ना अभी ये पूछ ही रहा था मैकबेथ के क्या मैकबेथ जग गया है, इतने में देख रहा है मैकबेथ has come. So he's saying our knocking has awakened him. Here he comes. So Lennox is saying good morning noble sir. Macbeth को बोल रहा है good morrow both of you. Macbeth is saying is the king steering money awake worthy then? Macbeth बोला not yet. Macbeth is saying yes, king did command me, order me to call directly on him. I've almost slipped the hour. Macbeth बोल रहा है कि हमको किंग बोले थे कि आके हमको उठाना, लेकिन हम तो खुद ही टाइम पास हो चुका है. मतलब मैकबेथ को डर लग रहा है कि जब डंकन का बॉडी डिस्कवर हो तो हम वहां रहे ताकि कुछ अगर मैनेज करना पड़े तो कर ले. So Macbeth is very very tensed, panicked and anxious. So he believes that if he is along with the dead body, he probably can manage certain things. So Macbeth is saying that King Duncan appointed him to wake him in the morning, but the time, suppose he has said to awake him at 8, it's already 9. Macbeth is saying, I bring you to him. Macbeth is saying, हम आपको ले चलेंगे डंकन के रूम तक. Macbeth बोल रहा नहीं. I know it's a joyful trouble to you, but still it's one. बोल रहा है कि हम कोई दरकार नहीं, हम पता है कि आप खुशी खुशी अब पहुंचा लिएगा, लेकिन हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं. The lever we delight in physic pain. So Macbeth is saying ये लेबर में तो हम लोग को फिजिकल पेन जो हो रहा है ये तो खुशी का बात. This is the door. So now Macduff goes into the room of King Duncan to awake King Duncan, not realizing till now that he will find a dead body. So Macbeth is standing at the door along with Lennox, and Macduff goes into the room to awake King Duncan. दरवाजे पे मैकबेथ और लेनक्स खड़े हैं और मैकडफ goes into the room to awake King Duncan. मैकडफ जाने से पहले बोल रहा है, make so bold a call for it is my limited service. मैंने it is my specific service. बोल रहा हम बहुत तेज से चिल्ला के उठा देंगे क्योंकि मेरा ही काम है. Lennox is asking Macbeth, goes the king hence? मैंने क्या आज ही डंकन वापस जाएंगे? Macbeth बोला yes he does, he appoints. मैंने यही बोले थे कि आज किंग डंकन वापस जाएंगे. मैकबेथ को बात करने में डर लग रहा है. He is very anxious, he is panicked. Lennox, the night has been unruly. Lennox बोल रहा है ये रात बहुत भयानक था. Shakespeare always gives a hint that coming even cast the shadow before they come. अनहोनी होने से पहले कुछ ना कुछ सिंबल देता है. So Lennox is saying the night has been unruly. रात बहुत भयानक. और हम लोग जहाँ सोए थे, where we lay, और chimneys were blown down. हम लोग का घर के ऊपर जो चिमनी होता था उड़ गया था. And as they say, lamenting, crying was heard in the air. Strange screams of death. माने मुर्दा लोग चिल्ला रहा था. And professing with accent terrible, और अजीब accent में मुर्दा चिल्ला रहा था. Lennox is saying कि हम लोग जहाँ सो रहे थे वहाँ का चिमनी उड़ गया था और अजीबो गरीब आवाज आ रहा था और हम लोग जहाँ थे वहाँ एक अजीबो गरीब एक्सेंट में भूत चिल्ला रहा था. डायर कंबशन एंड कंफ्यूज्ड इवेंट न्यू हैज टू द ऑफुल टाइम. सो मुर्दा चिल्ला रहा था. डायर कंबशन मतलब कुछ डेंजर होने वाला है, कुछ कंफ्यूज्ड इवेंट होने वाला है. न्यूली हैज टू द ऑफुल टाइम, और हम लोग का जैसा अभी बुरा टाइम चल रहा है वॉर का, वैसे ही कुछ होने वाला है. द ऑब्स्क्योर बर्ड मतलब द नाइट बर्ड कॉल्ड आउल क्लैमर्ड द लाइफ लॉन्ग नाइट. वो रात भर चिल्ला रही थी. एंड सम से the earth was feverish. अर्थ को बुखार हो गया था. अर्थ जैसे बुखार से लोग काटते हैं, अर्थ कांप रहा था. And earth did shake. Macbeth is saying yes, it was a rough night. Macbeth ज्यादा बोल नहीं रहा, उसको डर नहीं. My young remembrance cannot find a parallel to it. लेनक्स बोल रहा है कि हमको जहां तक याद है इतना भयानक राइट कभी नहीं हुआ था. इतने में मैकडफ आ रहा है.
अंदर से डंकन के रूम से Macbeth is coming out of the room of King Duncan. So he has seen the dead body of King Duncan. So he's so confused and he doesn't know how to react. So he's saying, heart, not tongue nor heart can conceive nor name thee. Macbeth बोल रहा है, न टंग बता सकता है कुछ, न हार्ट समझ सकता है क्या हुआ. मैकबेथ और लेनक्स दोनों एक साथ बोल रहा है, व्हाट्स द मैटर. कंफ्यूजन हैज नाउ मेड हिज मास्टरपीस. इसको बोलना चाहिए डंगन मर गया, लेकिन इतना कंफ्यूज हो गया, बावला हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा बोले क्या. So Macbeth is saying, confusion has now made his masterpiece. मतलब confusion बहुत ज्यादा हो गया. Most sacrilegious murder has broke open the Lord's anointed temple and stole hence the life of the building. बोल रहा है most sacrilegious murder हुआ है. मतलब sacrilegious मतलब होता है that something which is insulting to religion, God or king. So sacrilegious means something that is against religion, against God, against king. तो ये बहुत ही sacrilegious murder हुआ है. And somebody has broke open. मतलब किसी ने आके मंदिर को तोड़ दिया है, मतलब डंकन के बॉडी को फाड़ दिया है, मार दिया है. एंड द लॉर्ड अनॉइंटेड टेम्पल, मतलब दिस इज अ टेम्पल, Duncan's body is compared to temple, and they have stole hence the life of the building. जैसे एक मंदिर में किसी ने मंदिर में ढुक के मूर्ति को चोरी कर लिया है, वैसे ही somebody has went into the temple and stole hence the life of the building. So Macbeth is saying the Lord anointed temple has been broken. मतलब किसी ने डंकन के डेड बॉडी मैंने बॉडी को अटैक किया और वहां से उनका सोल लेके भाग गया. What do you say? What do you, मैं को बोला क्या लाइफ क्या मतलब समझे नहीं. समझा तो सभी है. Leonard saying, do you mean King Duncan, His Majesty? Macbeth is saying, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग जाओ. Approach your chamber. ये chamber room में जाओ and destroy your sight with a new gorgon. Gorgon was a monster जिसको देखने से लोग स्टैचू हो जाते थे. उसके बाल के जगह स्नेक था. It's a mythological lady in Greek mythology and Roman mythology. She had snakes instead of hair. Anybody who looked at her turned into a statue. So Macduff is comparing Duncan's dead body with Gorgon. So Macduff is saying कि हम नहीं बताएंगे, I will not say what has happened. Go inside the room, Duncan's chamber, and destroy your sight with a new Gorgon. मैंने Gorgon को देख के अपना आँख बर्बाद कर दो. Do not bid me speak. बोला हमको बोलने मत बोलो, हम नहीं बोल पाएंगे. तुम हम बहुत परेशान है. See and then speak for yourself. तुम लोग जाओ खुद ही देखो. So Macbeth और लेनॉक्स दोनों जल्दी डंकन के रूम में जा रहे. और मैकडफ चिल्ला रहा, अवेक अवेक अवेक, रिंग द अलार्म बेल, मर्डर एंट्रेस एंड बैंको अवेक, डोनाल्ड अवेक, मैल्कम अवेक, सिक ऑफ द डाउनी स्लीप. बोल रहा वो डाउनी स्लीप, उठ जाओ. So उससे उठो. डेथ काउंटरफिट, मतलब स्लीप इज सपोज टू बी ए काउंटरफिट डेथ, मतलब एक नकली डेथ है स्लीप. उससे उठ जाओ. शेक ऑफ, लुक ऑन डेथ इटसेल्फ. बोल रहा तुम लोग नकली मौत से उठ के असली मौत देखो, डंकन का मौत. वेक अप अप एंड सी द डूम्सडे इमेज. बोल रहा देखो कयामत आ गया. डूम्सडे इज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी अ डे विल कम व्हेन एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. कयामत का दिन. सो मैकबेथ डंकन का मर्डर is like doomsday. Malcolm, wake up. Banco, wake up and rise from your graves to walk like spirits. So in the doomsday, हर कोई कब्र से निकलेगा, because according to Christianity, everybody is in the grave. So they will be waiting till the doomsday. So he's saying कि doomsday आ गया, अपने grave से उठो and walk like ghost to countenance an entrance to face this horror. Which horror? The murder of King Duncan. तो ये सबको उठा रहा, बोल रहा कम ऑन, कयामत का दिन आ गया. सब लोग अपने अपने कब्र से निकले, ग्रेव से निकले, टूम से निकले. मतलब क्रिश्चियंस लोग जो ग्रेव बनाते हैं. सो ही सेइंग टू एवरीबॉडी कि यू गेट अप फ्रॉम योर ग्रेव्स. तुम लोग उठो ऐसे कि कयामत का दिन आ गया और लोग सब कब्र से उठ के दे आर गोइंग टू फेस दिस हॉरर. काउंटेनेंस मींस फेस दिस हॉरर. व्हिच हॉरर? द मर्डर ऑफ किंग डंकन. सो ही रिंग्स द बेल. डिंग डोंग. बेल बजा, बहुत देर तक बेल बजा, वो चिल्लाता रहा. उसके बाद लेडी मैकबेथ आई अपना नींद में. मैंने नींद का एक्टिंग में रहता. What is the business that such a hideous trumpet calls to parley the sleepers of the night? बोल रही क्या हुआ कि सब लोग इतना तेज चिल्ला रहे हैं और मीटिंग के लिए सबको बुला रहे. क्या हुआ? What is the business that somebody is calling for parley the sleepers when people are sleeping in the night? Speak. Macbeth, oh gentle lady,
It is not for you to hear what I can speak. बोला मैडम ये आपके लिए नहीं है, आप नहीं सुन सकेगा क्या हुआ है. The reputation in a woman's ear would murder as it fell. बोला मैम आप नहीं सुन पाइएगा, आप सुन के आपके कान में ये न्यूज जाते ही आपको कुछ हो जाएगा. उसको ये पता नहीं that she is a planner, but however, so Lady Macbeth is saying, madam, it's not for you to hear. हम आपको नहीं बता सकते, ये बहुत ही डेंजर बात है. It can murder you, man, it can kill you if you hear. Oh Banco, our royal master is murdered. सपने में बैंको आया. Macbeth is saying, oh Banco, King Duncan is murdered. Alas, in our house. लेडी मैकबेथ बोली मर गया हमारे घर में. बोलना चाहिए था कैसे तो पूछ रही है हमारे घर में. तो बैंको बोल रहा है टू क्रूएल एनीवेयर, कहीं भी मर्डर हो क्रूएल ही है. तो ही सेइंग टू मैकडफ के डियर मैकडफ आई प्रीटी कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट सो. ही सेइंग कि एक बार बोल दो कि जो तुम अभी बोले वो झूठ है. ऑलमोस्ट लाइक हिंदी सीरियल, ये कह दो ये झूठ है. सो मैकडफ इज सेइंग किंग डंकन इज मर्डर्ड. सो बैंको इज सेइंग प्लीज से कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ, मतलब तुमने अभी कहा जो, उसको बोलो नहीं नहीं डंकन नहीं मरे, हम तो इससे मजाक कर रहे थे. इतने में मैकबेथ एंड लिनस दे हैव कम एंड रॉस एंड एवरीबॉडी. Now Macbeth has to show a false sense of sorrow, right? Otherwise people will doubt him. So he has an over the top emotions of being very, very sad. He is so more sad, more disappointed than Malcolm and Donald when Duncan's own son. So Macbeth is very angry, very dejected, very frustrated. He's very depressed and he says, had I died an hour before this chance, I would lived a blessed time. मैकबेथ बोल रहा मैं अगर इस घड़ी से 1 घंटा पहले मर गया होता तो मेरा जिंदगी सफल हो जाता. ये देखने के लिए मैं बचा क्यों. Had I died an hour before this, मैंने आकाश में डंकन के ये डेड बॉडी देखने से 1 घंटा पहले मर जाता. I would live a blessed life. From this moment there is nothing serious in life. He's saying अब जिंदगी में कुछ भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं है. डंकन के मरने के बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं है. There is nothing serious in mortality means life. All is but toys. जिंदगी एक खिलौना हो चुका है. Renown and grace is dead. मतलब डंकन is famous, डंकन is graceful, positive, holy. अब वो मर चुके हैं. The wine of life is drowned and the mere lease is left the wall to brag of. He's saying that स्कॉटलैंड में जो वाइन था डंकन का वो खत्म हो गया. Now mere leaves, few drops are left to brag of. अब ये अगर ये बॉटल ऑफ वाइन है, इसमें से वाइन खत्म हो जाए, कुछ बूंद बचे, तो ये बॉटल किस पे घमंड करेगा. So the wine of life is King Duncan. He is drawn, मतलब he is gone, and the mere leaves, मतलब few drops of is left to brag of. मतलब कुछ बूंद बचे हैं, अब वो किस पे घमंड करेंगे. So यहाँ मैकबेथ को बहुत दुख हुआ, at least he's pretending, and he's saying, I wish I had died an hour before this chance. मैं कल थोड़ा देर पहले मर गया होता तो मेरा एक blessed life हो जाता. From this instant, अब से लाइफ में कुछ भी सीरियस नहीं है. मोर्टेलिटी लाइफ में जिंदगी एक टॉय है. रिनाउ क्योंकि ग्रेस मर चुके हैं, पॉजिटिविटी मर गया है, ग्रेस मर चुके हैं, रिनाउन में फेम डंकन का मर चुका, जिंदगी का वाइन चला गया और कुछ बूंद हम लोग बच चुके हैं जिंदगी को गर्व होने के लिए. अब क्या ही बचा है. इतने में डंकन के 2 बेटे आते, मैल्कम एंड डोनाल्ड. डोनाल्ड इज सेइंग व्हाट्स अमिस, व्हाट्स रॉन्ग. मैकबेथ इज सेइंग यू आर एंड यू डू नॉट नो, तुम हो और तुमको मालूम नहीं है. And he's saying it's a very weird statement to make when somebody's father is dead. He's saying the spring, the fountain of your blood is stopped. He's saying कि जिस fountain से, जिस झरना से तुम्हारा खानदान का डायनेस्टी आ रहा था वो बंद हो गया. The very source of it is stopped. Your father is murdered. Macbeth is saying कि Duncan is murdered. Malcolm's father is murdered. Malcolm is saying by whom? So Lennox is saying कि those of the chamberlains, मैंने guard as it seems, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि गार्ड लोगों ने मारा था. Their hands and faces were dashed with blood. उनके हाथों में खून लगा हुआ था. So were the daggers. उनके डैगर में भी खून था. Unwiped. डैगर को पूछा भी नहीं गया. And where we found them upon the pillow, हम लोग उनके पिलो के पास डैगर मिला. They stared and were distracted. उन लोग हमको देख रहे थे, चौंक रहे थे. No man's life was to be trusted with them. लेनक्स से उन पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए था.
लिनक्स इज सेइंग कि अभी तक ऐसा लग रहा है दोज ऑफ द चेम्बरलिन, माने दोज ऑफ द गार्ड्स हैव किल्ड इट। पूछा जा रहा है कि हु हैज किल्ड किंग डंकन, मैल्कम इज आस्किंग कि कौन मारे मेरे पापा को। लिनक्स इज सेइंग कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दोज ऑफ द चेम्बरलिन्स, मीन दोज ऑफ द गार्ड हैज किल्ड हिम, एज इट सीम्स हैड डन इट। Their hands and faces were all batched with blood, उन्हें उनके हाथ पे चेहरे पे सब खून का निशानी था, उनके डैगर पे भी था, अनवाइट, उन्हें वाइट नहीं किया हुआ। इट वॉज ऑन द पिलर, दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, उन्हें वो लोग गार्ड लोग ऐसे चौंक रहे थे, वो लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। नो मैंस लाइफ इज टू बी ट्रस्टेड विद देम, मैंने उन पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब इतने में मैकबेथ चिल्लाने लगा। नहीं तो इससे पहले कि लोग पूछे मैकबेथ से कि तुमने क्यों मारा दो गार्ड्स को, ये पहले ही बोल देता, येट आई डू रिपेंट ऑफ माय फ्यूरी दैट आई किल्ड देम। मैकबेथ बोला हमको बहुत अफसोस है कि मैंने गुस्सा में दो गार्ड्स को मार दिया। तो मैकबेथ इज सेइंग व्हाई डिड यू किल देम। मैकबेथ पूछ रहा कि गार्ड को तुमने क्यों मारा। हम लोग उससे पूछताछ करते, पता चलता कि गार्ड के पीछे कौन था, कौन भेजा था गार्ड को मर्डर करने। सो मैकबेथ गुस्सा होकर बोलता, हु कैन बी वाइज एंड मेस टेम्परेट एंड एवरीथिंग इन द सेम मोमेंट। मैकबेथ बोल रहा है कि हमको गुस्सा भी आए, हम कंट्रोल भी करें, अकलमंद भी रहे, एक साथ तो नहीं सकता। Macbeth is saying कि हमको गुस्सा आ रहा था, I cannot be temperate, I cannot be, I was so shocked, so I cannot be logical at that time. If I'm furious, मैंने गुस्सा, so I can't be at the same time. He's saying I'm so loyal to King Duncan, so how can I be neutral? So मेरे घर में मेरे भाई को कोई मार दे और हम लॉयल ना रहे, न्यूट्रल हो जाए। He's saying no man, बोल रहा कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जिसको गुस्सा आएगा और वो कुछ करे ना। So Macbeth is justifying his killing of the two guards by saying that nobody can be wise, shocked and controlled in a moment. No man. The expedition of my violent love outran the cause or reason. He's saying मेरे अंदर इतना एक्सपीडिशन ऑफ लव था, मतलब मेरा लव इतना पावरफुल था कि हम अपने आप को रीजन से रोक नहीं पाए। He means to say that I was so excited in my emotions that I could not stop myself. Here lay Duncan, his silver skin lashed with golden blood. He's saying कि डंकन का बॉडी वहां था, उनका सिल्वर स्किन था, गोल्डन कलर का ब्लड था, एंड हिज गैस स्टैब लुक लाइक ए ब्रीच इन नेचर, और हर जगह स्टैबिंग जहां था ऐसा लग रहा था कि धोखा है। फॉर रूइंस द वेस्टफुल एंट्रेंस, सो एक एक जगह एंट्रेंस था डंकन के बॉडी में ऐसे। Stepped in the colors of the trade, and the daggers unmannerly breached with gore, and the dagger was covered with blood. Who could refrain? बोल रहा अगर कोई किसी से प्यार करे और उसके बिलवेड को, उसके किसी चाहने वाले को, लव्ड वंस को कोई मार दे, तो कोई रिफ्रेन कर पाएगा? Who had a heart to love and in that heart courage to make his love known? Is saying कि हम डंगन से प्यार भी करते थे और प्यार दिखाने का मौका भी मिला तो हम कर दिए मर्डर, हो गया बस। So he's saying if somebody really loves somebody, if somebody has the heart to love, and in that heart he also has the courage to make his love known to everybody, he will not stop from killing his uh, loved ones criminal। मतलब कोई मम्मी पापा को मार दे तो कोई रहा जाएगा थोड़ी ना किसी से, आम आदमी से। सो ही सेइंग हु कुड रिफ्रेन, कि अगर किसी के अंदर प्यार हो तो कोई रुक पाएगा उसके भाई को, उसके कजिन को, उसके गॉड सेंट जैसे किंग को कोई मारे तो कोई देख पाएगा? So Macbeth is here trying to justify his killing two guards. He's saying, I love Duncan so much, so out of love, I have to kill the two guards. Lady Macbeth बेहोश हो गई। सच झूठ पता नहीं, लेडी मैकबेथ इज अबाउट टू फेंस, हेल्प मी हैंड्स, मैं बेहोश हो रही हूँ। कोई बेहोश होता है बोल के? पता नहीं। Macbeth looked to the lady, means Macbeth is saying something, ये इसको बोलो। मैल्कम डोनाल्ड आपस में Why do we hold our tongue when the most claim the argument is for ours? Malcolm is saying कि सबसे ज्यादा close connected हम लोग अपने पापा से, और हम लोग ही चुप है। When why are we holding our tongue when the argument is about us? Donald Ben is a younger brother. He said, "What should be spoken here?" ये बोल रहे यहाँ बोल के कुछ फायदा नहीं है। Wherever fate hid in an augur's hole, he's saying कि अभी यहाँ कुछ बोलना सांप के बिल में हाथ देने के बराबर है, और जैसे हम लोग हाथ देंगे it will rush and seize us. Let us be away. He's saying कि जल्दी से हम लोग, इससे पहले कि आंसू सूखे, हम लोग भाग जाते हैं। Our tears are not yet brewed, means not yet dried.
nor our strong sorrow upon the foot of the motion, he says, और हम लोग का sorrow भी हम लोग को रोक नहीं पाएगा, मतलब बहुत दुख है, but still we will run away faster. This proves that Malcolm and Donalbain, they are really, really very well trained as a princes, because they know that if somebody can kill King Duncan, they will not hesitate to kill Malcolm or Donalbain. So it's not time to argue and say कि दुख हुआ, जिंदगी क्या हो गया. It's time to be safe for time being. Then we will decide what is to be done. So he's saying, let us be away, even before our tears are dried. So Malcolm is saying, yes, before sorrow will not hold on us. Banco, look to the lady. Banco, lady में कोई बेहोश हो रही तो सब लोग बोला नहीं उसको संभालो. When we have our naked frailties, so सब अभी बहुत ठंड का टाइम है, स्कॉटलैंड है, so वो लोग सब नाइट ड्रेस पहन के आ गए, सबको ठंडा लग रहा हाफ नेकेड बॉडी में. They're saying when we have our naked frailties, when a body here, this suffer in exposure, मतलब ये सब expose होके suffer हो रहा है. Let us meet and question the most bloody piece of work. He's saying कि हम लोग मिलते हैं and let us question the most bloody piece of work. मैंने किंग डंकन का मर्डर को question करते हैं, to know it further. Fear and scruples shake us. So he's saying कि fear और doubt से हम लोग कांप रहे हैं. In the great hand of God I stand. So here he's saying कि पहले हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं क्योंकि उनका बॉडी ठंडा में एक्सपोज हो रहा है. हम लोग सब मिलते हैं ड्रेस चेंज करने के बाद. And let us question the most bloody piece of work. हम लोग सोच विचार करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इतना भयानक मर्डर किसने किया, ताकि हम लोग को आगे पता चले. So he's saying fear and scruple means doubt. सबको डर लग रहा है, डाउट हो रहा है कौन मर्डर है कौन नहीं. It is shaking us. So Banco is saying, in the name of God I stand, and against the undivulged pretensions I fight of the treacherous malice. He's saying कि हम यहाँ ऐलान करते हैं कि हम सबसे लड़ेंगे अगेंस्ट द अनडाइवर्ज प्रिटेंस, मैंने बिना कोई प्रिटेंशन के, बिना कोई फेक हुए, सिंसियर हुए. आई विल फाइट अगेंस्ट एनीबडी हु इज अ मर्डरर, अगेंस्ट एनीबडी हु इज ट्रेचरस, मतलब धोखेबाज. मैकबेथ इज सेइंग ओके सो विल आई, हम भी लड़ेंगे, ऑल एवरीबडी, हम लोग सब लड़ेंगे. सब लोग चले गए ड्रेस चेंज करने, ठंडा लग रहा था उनको, आधा नंगा थे वो, और वो लोग कपड़ा पहन के आके डिसाइड करेंगे कि मर्डरर कौन है. मैकबेथ इज सेइंग यस लेट अस पुट ऑन द मैनली रेडीनेस, मैंने मर्द वाला ड्रेस, manly male readiness here means dress, and let us meet in the hall, all well contented. वो लोग बोल रहे yes contented. So everybody goes to change their dress. Malcolm is saying to his brother, what will you do? Malcolm is saying कि क्या किया जाए. Let us not concert with them, means let us not go with them. To show an unfelt sorrow is an office that a false man does easy. He's saying कि जिस इंसान को sorrow feel नहीं होता, वो सबसे ज्यादा sorrow दिखाता है. To show an unfelt sorrow is an office that the false man does easy. Malcolm is saying कि to show a sorrow that you don't feel is a characteristic of a false man. False man लोग बिना sorrow feel के दिखाता है. I will to England. Malcolm बोल रहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जल्दी से भाग रहे हैं इंग्लैंड. डोनाल्ड बोल रहा है I will go to Ireland, क्योंकि our separated fortunes will keep us safe. अलग अलग रहेंगे, अगर एक मर भी जाए फिर भी डायनेस्टी चलेगा. Here we are, this dagger is mine. He's saying हम लोग जहाँ हैं, हर इंसान के चेहरे पे स्माइल है, लेकिन उस स्माइल के अंदर डैगर है. There is dagger inside the man's smile. चेहरे पे स्माइल है और अंदर में डैगर है. The nearer in blood, the nearer blood. He's saying जो हमारे रिलेशन में सबसे करीब है वो सबसे भयानक है. The murderous sap has been shot, has not yet been lighted. Malcolm is saying कि जिसने भी arrow of murder किया है, मतलब anybody who shot the arrow, he actually wanted the throne. So now throne is empty. So if we are there on the throne, they'll try to kill us. So the murderous sap means arrow, that is shot, means जिसको फेंका गया है, has not yet reached his aim. And the safest way is to avoid that. He's saying कि जो कोई भी Duncan का मर्डर किया, he wanted the throne. So he will try to kill the next person who will get the throne. So therefore हम लोग भागते, let us go to horses and let us not be dainties of leave taking. He's saying कि नहीं सबको गुड बाय बोल के जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये बोलने से हम लोग फंसेंगे. Let us swift, quickly go away. And there is warranty in the theft, means there is guarantee, there is confirmation in the theft. Whoever steals itself, there is no mercy left. He's saying कि जो कोई भी मर्डर किया है वो प्रूव कर रहा है कि कोई हम लोग पे भी मर्सी नहीं करेगा. So there is warranty in the theft, मतलब there is a proof in the theft. Whichever steals itself, there is no mercy left. मतलब कि जिसने भी मर्डर किया है वो ये प्रूफ कर दिया है कि अब किसी पे मर्सी नहीं हो सकती.
So here the scene ends with Malcolm going to England and Donalbain going to Ireland, because they think that there will be no mercy on them. If somebody can kill an old man like Duncan, they will not have mercy on Malcolm and Donalbain. So like a very wise person, they are not emotional, they are not sentimental, because they are after all princes. They're trained to behave rationally even in a moment of crisis. So they run away, because if they will be here, then their life is at risk. And so Malcolm goes to England, Donalbain goes to Ireland, so that even if one is caught, the lineage will continue. So here the scene ends. This is called Potter's Soul. So thank you for watching the video.